Hello, guys. Welcome to the second episode of On the ROX. Today we have founder of Sassiest, Aishwarya Dua. Let's begin the episode. Aishwarya, welcome to On the ROX. Thank you. Glad to have you. Thank you so much. And I know you for years. And I know. I'm like, yeah, so excited to have you on the podcast. Okay. So I know you for years. I know your brand intelligence. Okay. I know how you understand all this. And when you came to me and told me I'm starting something, okay, and when you told me the whole idea, I was blown away. Okay, and I'm so excited to see that how things are shaping up now. Okay, and you started Sassiest, more than 2 years, the journey. 1.5 years. 1.5 years, the journey, and like 20,000 plus community, already making an impact. So, would love if you can say a few words about you to the audience and Sassiest के बारे में बताओ. क्या कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे? Who am I? You already know my name. You already know what I'm doing. I guess I'm just someone who is here in this world to solve few things and serve a purpose. No more than that. I'm someone who realized, luckily very early in the age, that one human being coming into the world has a purpose, and that purpose is something that keeps me going. What purpose are you solving with Sassiest? बहुत ही कह सकते हैं ना, लोगों के लिए शायद इस पर्पस में दम नहीं है, लेकिन जब इंसान निकलता है कुछ चीज़ों से, तो काफ़ी लोग निकल भी रहे होंगे अपनी लाइफ में, हैट्स ऑफ टू देम। जब आप हंसना भूल जाते हो तो आप सिर्फ यही चाहते हो कि क्या आप किसी और को हंसा सकते हो, क्या आप किसी और के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल भी ला सकते हो। एंड माई ब्रांड इज ऑल अबाउट दैट। व्हेन आई वर्क विद यू और करिश्मा और निकिता, all three of you are the pillars with me, and always I guess we have the conversation about it कि यार अगर एक औरत Sassiest पर आ रही है, if that woman is coming, she should not go upset, she should be smiling, and that is the purpose, and that is all I want to do. Even for the once in her lifetime I make her smile, my purpose is solved. If anyone doesn't know about Sassiest, even a single bit, how will you explain to that person like what is Sassiest and what they can get out of the brand and the product and the whole experience that you're doing? Sassiest, in a very corporate or a good language, you can say it's India's first doctor-backed sexual wellness and pleasure brand for women. Or when it comes to what person gets, is something that mind, spirit and body, the balance of it, and how we help women understand themselves and their journey throughout from the age of 21 to 49, and that's what Sassiest is doing, where we are helping women to understand what stage of life can bring to them and what are the certain changes that can be catered with utmost grace and utmost the feeling of fulfilled heart. जब एक feeling आती है कि I'm just fulfilled with everything that I have in my life. Whatever I have in my life, I'm content. I guess that is what we are also making everyone understand with ourselves. Me being a woman, with Karishma being there, with Nikita being there, I guess we three of us are also helping us learn and unlearn few things. That okay, this is what we want to do with ourselves, and when we change, we'll be able to change the entire world around us. Sassiest में जितना ही importance pleasure का है उतना health का है, because they both are connected. And I know how you are in a position Sassiest that कि हमारे पास it's not only about pleasure. Pleasure plus health plus intimacy plus intimate and everything. आप audience को एक बार ये explain कर सकते हो कि Sassiest from the core, you told me the positioning statement, but if as a consumer I want to understand it, what value I get from Sassiest? You get love from us, you get a lot of care from us, where you feel carefree, you can be who you are, and आप जो चाहो आके बात कर सकते हो, जो चाहे हमसे समझ सकते हो. What I take care of is that nobody
should be going without anything from us. When they're coming, they should be getting something. It can be knowledge, it can be the product, it can be us ourselves, it can be anything, but they should get something or the other from us, or probably the left. Sassiest ने बहुत अच्छी community बनाई है. So I think around 20,000 people are there in your community who are vocal about their pleasure point, and that should be going as well. Very soon, I think 1 lakh. Yes. So वो community बनाना, see I'm a marketer, तो मैं समझता हूँ कि यार if you can have a community around your brand, you have a customer for life, and it's the best retention strategy you can have, and also a word of mouth amplification strategy. एक D2C ऑनलाइन, क्योंकि मैं जो बता रहा था ऑडियंस है, either they are entrepreneurs or already running their own business, either a D2C or any other category. As a new brand, marketing budget जहाँ पे कम होता है, वहाँ पे community build कैसे करें? आप एडवाइस देना चाहोगे to that? There's only one thing to that, I guess. That is how human you can be to the people who are coming even organically. When you do, there are certain ways to organically put yourself out there or your brand out there these days. When you do that, and when people are coming to you, what we did, what worked for us, is something that we just been human. We just heard them out. We took time to understand their problems. We took time to solve it for them, with them in the journey. We understood the pinpoints where where they wanted the solution we didn't have at that point of time, and that's where healthcare got little more उसमें थोड़ा सा हमें और like improvements करने पड़े, ताकि जो हम लोग समझ पा रहे हैं कि चाहिए वो हमारे पास नहीं है. तो how do we fix this? So that kind of thing where and I guess it worked when people came to us, and some of our customers just said that to us, in a message, and it was like I was crying like a little baby at that time, and when this message came to me, that I can't believe how human your brand is. And I guess that is what I want to maintain, and I guess that is what Zomato did so far. They're still doing it by Blinkit now. Same approach is like followed after it is like acquired, and I'm glad it did, because I guess this is what the game is. The more human you are, you will build it, and you will build it stronger. This is what rest everything follows. So you're saying that just be honest, be human, and do just what you do as a person. Be there to listen to them. It should not be like automated systems everywhere, and I know that is it's a requirement in a scale. But when it comes to certain things like Zomato till date does, even they have scaled like crazy, and they still have interventions of people in the middle if you're not okay with what the automated systems have given the response. They still have people to talk to. So I guess that should be the approach every brand should be following in the timeline. And it can never stop, no matter what AI comes, no matter what automations comes, but that human thing will be needed. Fair. That reminds me of an interesting story. How did you get on Blinkit? Okay, just I'm obsessed with Blinkit, and that's why I'm talking about it. Go on, just tell the story then. Because I appreciate Dipendra Goyal and Zomato obviously, and Albinder, both of them, and मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी खास किसी से भी. मैं सिर्फ अपने हाथ पाँव मारती हूँ, जो मेरी आदत है कि ट्राई करने में क्या जाएगा, आखिर में नो ही आएगा, इससे ज़्यादा क्या ही होगा. This has been my approach so far, and really I guess. And at that time I sent him a very heartfelt mail, and I'm a bootstrap startup, and I want to place myself with big brands like Durex, Score, etc. Whatever it is. I need help. I don't have money to flourish. कि मैं बस फेंक दूँ बाहर और वही सब चल रहा है. I want to stand with them right now. I need your help, and I've been very humble. मतलब ये तो मैं बहुत ही अभी शायद एटीट्यूड में बात कर रही हूँ, बट तब तो ऐसा था कि रोना निकल जाएगा अगर मुझे Blinkit नहीं मिला तो. वो प्लेसमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, और मुझे ये था कि एक स्टेप लेना पड़ेगा जहाँ पे Amazon जैसे ब्रांड्स नहीं आगे आते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, तो कौन आ सकता है.
So I guess Blinkit, Zepto, Swiggy, Instamart, these are the brands that are coming up and helping people to sell the need of the hour. Actually the need of the hour in real sense, in like 10 minutes or like 15 minutes or like makeup, beauty, sex, etc. blah blah, whatever it might be, they have it. They have diaries, they have I don't know what not with them. So why they are building this? Because they know कि घर पे अगर कुछ चीज की फीलिंग हुई है वहाँ पे सेल है. क्या आप उसे बेच रहे हो? हाँ जी मैं बेच रहा हूँ. Fair. यार ऐश्वर्या, तो जब शुरू में स्टार्ट किया था, ठीक है ना, you were telling me the story when you told your mom about it कि मैं ये करना चाहती हूँ, and then a lot of right people join hands with you. वो जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता, क्योंकि ना मुझे मैं एक चीज़ और बोलूँगा यार, क्योंकि अभी जो देख रहा है कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे वो ये बोलता होगा कि यार कि पापा क्या बोलेंगे है ना, या फिर मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, या अब हाई पेइंग जॉब छोड़ के मैं ये करना चाहता हूँ. मैंने ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है, यू आर वन ऑफ देम. बट मैं चाहता हूँ ना उसका अगर इमोशनली कम्युनिकेट करो, एंड व्हाट वुड यू से टू दैट पर्सन हु इज राइट नाउ एट द फेंस? Okay. So I'll tell you this. I'll start from how I started. मेरी माँ को समझाना बहुत आसान बात नहीं थी. पहली बात. My mom is so after my dad, my mom forcefully became a dad to me. मतलब वो मेरा बाप ही बन गई. और वो आधा माँ और आधे बाप के रोल में वो शायद ये हो जाती थी कि उसे कौन सा रोल प्ले करना. And I could get it. I could understand that. I was growing up. एंड उस समय पे जब मैंने उन्हें बोला मुझे करना है, अब आप अपनी माँ से झिझक में आंखों की शर्म में सारी बातें नहीं बोल सकते आप साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन माँ सब जानती है. आपको सब पता है भाई साहब, वो नहीं आप रोक सकते कि उसे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा होगा, तुम रो किस बात पे रहे हो, या फिर तुम परेशान क्यों, तुम्हारी आंखों में आंखें लाल क्यों हैं. तो वो सारी चीजें जब वो पूछती थी तो फिर झूठ निकलता नहीं था, बिकॉज मेरी माँ ही मेरी दोस्त थी. तो वो दोस्ती में सब बातें जान लेती थी मुझसे, क्योंकि वही तो याराना था हमारा, और है भी और वो रहेगा भी. अब उसमें मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मम्मी मुझे ना ऐसा कुछ शुरू करना है जहाँ पे कोई भी लड़की ना किसी भी लड़के पे डिपेंड नहीं होगी. वो कभी भी किसी भी गलत इंसान के हाथ में नहीं जाएगी. वो खुद को इतना जान सकेगी कि उसे चाहिए क्या, किस वक्त पे चाहिए भी है या नहीं. मार्केट के अंदर, हमारी कैटेगरी के अंदर अभी अगर आप देखोगे तो मोस्टली प्लेजर ही सेल हो रहा है, ठीक है, बट प्लेजर के साथ हेल्थ का जो अमैल्गमेशन है, that's not selling a lot, and other competitors are not doing it, which is our USP also, because we know there is a need. थोड़ा नीड के बारे में I want to know कि how you realize कि यार without bringing, so we have n number of doctors on panel who are helping us, who are making sure our customers are like taking the right approach, taking the right product, doing it the right way. If they have any issues, they are guiding them also. So how did you come up with that idea कि यार यहाँ पे ना doctors की ज़रूरत है? Again, let's go back to my story. जब मैं अपने उस सिचुएशन से बाहर निकल रही थी जो काफ़ी मेंटली और फिजिकली अब्यूजिव थी, उसने मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स को ढूंढने की कोशिश करने में भेज दिया कि मुझे किससे बात करनी है. आई कांट टॉक टू माय मदर, आई कांट टॉक टू माय फ्रेंड्स, दे विल प्रोबेबली जज मी, दे विल सी मी लाइक कितनी बेवकूफ लड़की है ये, इससे ये नहीं समझ रहा, इतनी बड़ी हो गई, 25, 26, 27, आई डोंट नो व्हाट एज, बहुत मतलब कि सब चलता था यार, चार कम नहीं. एंड देन ढूंढना मैंने कोविड के टाइम पे, स्पेशली 2020, एंड आई वाज सर्चिंग, मुझे कोई नहीं मिला यार, मैं किससे बात करूं. एक साइकोलॉजिस्ट की जगह साइकाइट्रिस्ट, लकीली मुझे कोई तरीके का मुझे किसी ने रिकमेंड किया, उसने मुझे आके मैं दवाइयाँ दे दी. मैंने कहा मैं पागल नहीं हूँ भाई साहब, मुझे नहीं चाहिए ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मुझे डिस्कस करना है और मुझे सिर्फ अपनी बात बाहर निकालनी है. क्या कोई है मेरी बात सुनने के लिए? If I am alone today, is there anyone to hear me out where I can feel that no, this person is not judging me and can give me the right solutions after hearing me? And there are experts like that. There are educators, there are counselors, there are like psychologists
अभी तक मुझे पता नहीं हम उस बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। दैट्स वेयर आई गेस इट केम अप कि हेल्थ, अगर मेरा दिमागी संतुलन शरीर से मैच नहीं होता, साथ मेरा दिल उससे मैच नहीं होता, तो मैं कहीं की नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती लाइफ में, चाहे वो एक आदमी हो चाहे वो एक औरत हो। तो बच्चा पैदा कर लो, बच्चा पैदा ना करो, आप शादी कर लो, मत करो, कुछ भी करो, अगर ये दिमाग शरीर और दिल साथ में नहीं है, आप लाइफ में कुछ तरीके से नहीं कर सकते। ना आप डिसिप्लिन ला सकते हो, ना आप उसको फॉलो कर सकते हो, ना आप कोशिश भी कर सकते हो कि आप बेड से उठ जाओ। और मैं वहां से निकल चुकी, जहाँ मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बेड से उठ सकूं। तो वो डिप्रेशन है, वो एंजाइटी है, वो ट्रॉमा है, वो जो भी है मुझे नहीं पता, बस उस समय पे रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी थी कि मुझे कोई पर्चे पे ये लिख के ना दे कि मुझे डिप्रेशन है। That's why you introduce Judge Not Dog. Nikita is love of my life. Like when she came into my life in 2019, I didn't know we'll be doing this together. We just met in Kasol. We were there for a trip with my friends, and I just met her randomly through my friend, and we became friends. Suddenly she came to my house, stayed with me for like 15 days or 20 days. Somehow we got connected from heart. We discussed everything we had to, and 2021 में उसे हम लोग कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कौन से चीजें निकल रही हूँ। मेरे उस जर्नी में कहीं ना कहीं, इतने हम तब तक क्लोज नहीं हुए थे ऑब्वियसली, बट उस जर्नी में कहीं ना कहीं बाहर निकलने का रास्ता भी उसके थ्रू ही आया है मुझे। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट बिकॉज आई वाज डिस्कसिंग दैट विद हर, मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या करना है, एंड शी हैज बीन वन पर्सन, नॉट टू क्लोज फ्रेंड, but somebody was telling me, yes, this is important, you are doing it right. That validation was okay for me. And I guess when I told her about this, she herself being the doctor who talked to so many people, I don't know, world has, like this universe has some ways to bring people to you. Yeah. And it was already planned. I couldn't do anything. So Nikita right now manages Healthcare. Healthcare is hers. Healthcare so she's a chief healthcare officer. Yes. She has taken it all on herself, and I guess she's doing a good job. And how many doctors are right now? Pamela, how many? Right now we have around 10 doctors, like gynecologists, like sexologists, sexual health coaches. We have life and like relationship coaches. We have intimacy coaches. So all of that is there, and I guess mental health we are partnered with like Mindpeers, because we thought that this is an entire different segment, but they were also looking for having sexual wellness space, because that is a requirement and that's what people are understanding gradually. Lucky us and lucky everyone in the world that everybody is like recognizing that sexual health is a very important part of mental health as well. And I guess that's where Mindpeers comes into picture. We are working with Even also as a coverage partner. We are working with Healthians also as a lab test like partners, so that we can tell people that it is not only it. Correct. You have everything. And how many products do we have right now? Yeah, so there are, I guess, around 12 SKUs that we have. The most loved one? Maybe like. Why they love? People are mad about it. Why? They buy it. I don't know if one goes wrong after the warranty system. They just buy it again. Probably it's because it's sleek and comfortable. And okay, so a brand is about first time use. Okay. जो लाइफ में पहली बार कुछ भी ऐसा एक्सप्लोर कर रहा है अपनी लाइफ में, अपने आप को, अपनी दुनिया को, या फिर विद द पार्टनर कुछ स्पाइस अप करना है, या फिर कुछ समझनी है लाइफ के बारे में, तो Sassiest is for the first timers. They come to us and they understand उनकी ज़रूरत कितनी है, उन्हें क्या डॉक्टर से बात करनी है पहले, या फिर उन्हें चाहिए जो है प्रोडक्ट, और लीड लाइक इसलिए भी बिकॉज वो सिर्फ प्लेजर को ही केटर नहीं कर रहा है, वो हेल्थ की प्रॉब्लम्स को भी केटर कर रहा है. वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी आर सॉल्विंग लाइक राइट नाउ विद इट इज like vaginismus, and we're able to do that. And that's where you asked pleasure और health कहाँ connect हो रहा है, वो यहाँ connect हो रहा है. Interesting. Got it.
And so you are, how many partners are there who manages what? So Nikita manages. Once I'm having a podcast with. Yeah. Okay. Once I'm having the podcast with, and thank you for being there from start and understanding from where I also came, because I guess you knew my journey, you have seen me growing. I was working with you, so by the way, everyone who is hearing this out right now, he was my boss. Now we are working together, it's a favorite concept. And then Karishma and Nikita are like angels, they came in, they helped. For you, I knew that you were there as a friend, right? I always knew that I can approach you. You have been very approachable, so वो tension था नहीं मुझे कभी. But करिश्मा और निकिता का काफी ही ऐसा है कि उम्मीद से बढ़कर बोल सकते हैं, और मैं ऐसे रिश्ते को पहले तो कभी नजर ना लगे, नंबर 1. नंबर 2 कि I wish to live a life with them that people think to live with their companions, their life partners, where I can give them everything I can and also be the part of their journeys with their, probably if they get married, if they choose to, if they get babies, if they choose to, or animal babies if they choose to, like celebrate their health. I would love to be the part of their journeys, and I'm lucky. 100%. Yeah. So Aishwarya, coming on to the last question. We'll have around 10 more. I have 10 more, but I'll make this one last. As a founder ना मैंने एक चीज़ सीखी है कि मैं यार दूसरों की गलतियों से सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैंने अपनी जर्नी में पहले 3 या 4 साल नहीं करा. मतलब मुझे पता है कि ये गलत है, फिर भी आई ऑलवेज हैव दैट अर्ज कि यार मैं करके देखूंगा, तब फेल हुआ कोई बात नहीं, ठीक है, मैं करके ज़रूर देखूंगा. बट ओवर द इयर्स व्हाट आई रियलाइज नो दैट यू शुड लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स. तो आप इस जर्नी में हो, यू आर अ सेकंड टाइम एंटरप्रेन्योर, ठीक है. पहले आपका एक्सपीरियंस रिच है, ठीक है, अब योर रिचेस हो रहा है. तो क्या आप ऑडियंस को बोलना चाहोगे कि they should learn from those mistakes that you have made that the other founders shouldn't do? Number 1, I guess this is a very important one कि intuition हमें हमारी समझना बहुत ज़रूरी है. हमें बहुत चमकते सितारे अगल बगल चलते हुए दिखते हैं, पर हर कोई चमकता सितारा होता नहीं है. Not everybody is a star. Yeah. Probably one of them knows how to portray them as a star, but they're not. And your intuition tells you that clearly. I guess that helped when I learned that. That has been my learning, that you don't have to trust anyone and everyone around. Trust your gut. If you're feeling comfortable the first time, that's your person. Second time, no. No second chances in life. I have given a lot. पहले मैं एक लाइन बोलती थी कि मैंने अपने खानदान के अलावा किसी को दूसरे चांसेस नहीं दिए, तो तू क्या है. बहुत एटीट्यूड था अपन में ना, बट नहीं, वो सारा निकल गया. वो एक टाइम के बाद, एक उम्र के बाद सारा निकल जाता है. जब असलियत दिखती है, फिर एक चीज समझ आई कि नहीं, सेकंड चांस, एक चांस काफी है आपको कुछ भी करने के लिए. और दूसरी लर्निंग शायद ये रही मेरी कि अपने लोगों के साथ, जो मेरा पहला स्टार्टअप था और अभी भी जो सब चल रहा है, जो कि सब हो रहा था, आई हैव लर्न दैट योर पीपल हु आर वर्किंग विद यू शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. बिफोर यू, आई वुड नॉट से दैट, बिकॉज इफ यू आर नॉट ओके, दे विल नॉट बी ओके. यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. गिव एंड टेक तब होना चाहिए जब आप गिविंग के लायक हो, नंबर 1. नंबर 2, जब आप दे रहे हो तो ऐसा करो कि उनसे पहले अब कोई और नहीं है, पहले वो हैं, फिर कोई और आएगा. और उसके बाद जब अपना लाइफ में अपनी जो कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो, जो आप लोगों को बिल्ड कर रहे हो, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग शुड बी योर फर्स्ट थिंग, नॉट द सेकंड. This I guess I have learned very. So second thing that you have learned is prioritize yourself also, because if you are not happy, you won't be able to take care of. Yes. And the third one? You can't be. The third one is difficult. I don't know if I should say this or not. Wow. I am. मुझे नहीं पता लोग इसको कैसे ले सकते हैं, बट मैं ऐसे लेती हूँ कि जब तक जिंदगी में कुछ अपने लिए बना ना लो, इंडिपेंडेंस से बोलते हैं, फाइनेंशियली,
physically, emotionally, अकेले रहना ना सीख लो जब तक किसी की जिंदगी में पूरी तरह से पार्टनर बनना वरना उसकी जिंदगी भी खराब कर दो. This is my third learning, and this is what it applies everywhere. It applies in my business, it applies in my personal life, it applies everywhere. I guess until and unless I am, this is for myself, this is my opinion. It can be किसी के लिए कुछ और हो सकता है, किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए हो सकता है कि शायद मैं किसी के साथ पार्टनर अगर मेरा कोई हो उसके साथ रहकर I can grow better. Absolutely, there are multiple examples today. Sugar is one of them. Like Mama Earth is like one of them. I guess these are the good examples to give right now. And on the other hand, there are examples who are setting up their own things, and I guess Naika is one of them. Thank you so much, Aishwarya. Thank you. Thanks for the amazing episode. I have spoken a lot. What? Cheers. Cheers. Thanks for coming to On the Rocks. Yes. So that's all, guys. Thanks for watching the episode, and I'll see you next week. Subscribe to the channel. Please feel free to comment and share your feedback. I see you next week.